go on to the next one. Okay, let's see this. MMH and Company is a large firm of chartered accountants having 10 partners and 7 branches across India. The firm had undertaken statutory audit of the branches of some insurance companies and public sector banks. They were also the central statutory auditors of a major private sector bank in South India. On 1st September 2019, the firm got an intimation from peer review board, ठीक है, regarding the peer review of the firm. तो याद रखना firm क्या है यहाँ पे? Firm has 10 partners. It has 7 branches across India. So of course it's a large firm. They have clearly given it is a large firm. And to prove that point further, they have said that it has done the statutory audit of some of the branches of the insurance companies and public sector banks. And आगे ये भी लिखा है कि they were also the central statutory auditors of some major private sector banks in South India. So they were the central statutory auditor, that is the head office auditors. Now what they have said is the board recommended some names of the reviewers. The practice unit MMH and Company firm selected CAR. So they have selected CAR as the what do you call uh, the peer reviewer. Okay. Now and intimated the name to the board. CAR along with his qualified assistant did an on-site review. So they went and did an on-site review. The firm was not happy with the preliminary report issued by the reviewer, arguing that the findings of the reviewer were baseless. So CAR ने कुछ बोला रहेगा ये बरोबर नहीं है वो बरोबर नहीं है करके, which the big large firm MMH and Company they did not like. तो आगे देखो क्या हुआ. The managing partner of the firm wrote a letter to the peer review board doubting the eligibility of the reviewer. So now they have questioned the eligibility of the reviewer. So now if you know the peer review chapter, no, so I'll show you one small area which is from our notes. So Ruben and Pranal may be knowing it. So ये अपने notes का एक page है where note we have the peer review का entities divided into level 1, level 2 and level 3. Level 1, level 2 and finally you have level 3 here. ठीक है. अभी level 1 में तो आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, so they have the central statutory audit of the private sector banks. देखो क्या लिखा है, central statutory audit of the private sector banks. तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आप एक level 1 entity already हो, if you are a level 1 entity, if you are a level 1 entity, so in our case this MMH is a level 1 entity. This MMH is a level 1 entity because it has the central statutory audit of the private sector banks. ठीक है. यहाँ पे अभी ये अपना क्लियर हो गया कि MMH is a level 1 entity. Then you will have one more answer where we go to another answer called as the eligibility of the reviewer. So ये वाले आंसर से अपन ने डिसाइड किया, एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू के लिए डिसाइड किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पीयर रिव्यू होने वाला है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है या नहीं है. ठीक है. So we came to know that it's a level 1 entity. So MMH and Company is a level 1 entity. So that basically means कि उनका peer review होना चाहिए once in every 3 years. This we had seen, like this is a standard fact. तो ये question से affect नहीं करता, but ये खाली information के लिए. So their peer review should be once in every 3 years. But the main point is अगर level 1 entity का peer review होने जा रहा है तो peer review कौन कर सकता है. तो see this, always the peer reviewer should have at least 10 years experience. क्या लिखा है, at least 10 years experience होना चाहिए. And now read this 6th point. See this, what is written? For conducting peer review of level 1 entities. So if there is any person who is doing the review of any level 1 entities, the reviewer should have conducted the audit of level 1 entities for at least how many years? For at least how many years? For at least 7 years. For at least 7 years. Now with these two knowledge, no, you will be able to answer this question. See this. Option number A, the chartered accountant having at least 15 years experience. No, we don't need this part because 15 years experience. Option number B, the peer reviewer shall be the chartered accountant having at least 10 years experience. Correct. We need this. And should have conducted auditor level entities for at least 7 years. So yes, that is it. This is the answer. This is the answer. आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. This is the answer. Are you understanding? देखो यहाँ पे क्या लिखा, level 1 entity. यहाँ पे क्या लिखा, level 2 entity. तो even though इधर भी at least 10 years है, इधर भी at least 7 years वाला point है, but still this will be the answer because that MMH and Company was a level 1 entity. एक मिनट, I'm asking everyone, are you clear about this fact? What do you think? Comfortable? Hetal, Archana, Smiti, Ruben, Shrutika, Pranal, Sakshi, Nidhi, tell me, are you comfortable understanding this part? Yes, ask. Please ask. Unmute and ask.
Sir, the point of 10 years experience, that stands for all level entities or only level 1 entities? all if you are a peer reviewer no then 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो ही आप peer reviewer बन सकते हो और अगर आप लेवल 1 एंटिटी का peer review करना चाहते हो तो आपके पास लेवल 1 एंटिटी का ऑडिट करने का 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 years. Okay, sir. Got it. and this is not 10 plus 7 years now this is 10 years which can include 7 years of audit of level 1 entities Right. got Okay. it yeah okay great easy चलो let's go to the next part एक मिनट रुकना okay एक सेकेंड just a second mistake yeah ठीक है तो ये पॉइंट अपना क्लियर यहाँ पे okay okay let's go to the easier version professional ethics whenever I see students answering professional ethics no there is a smile on their face because they know कि अच्छा ये तो मार्क्स मेरा ही है तो ICI कुछ भी कहीं भी तूफान ही मचा है बट प्रोफेशनल एथिक्स इज माय मार्क्स तो देखो क्या लिखा है letterhead of CA Pankaj a practicing CA is reproduced below Panaj De Pankaj ACS LLB and FCA and he has also mentioned that he is a chartered accountant and wow a member of parliament भी दिया हुआ लोग ने great आगे देखो क्या लिखा है एज पर चार्ट अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर ना तो इट मींस दैट वन जो भी आंसर तुम लोग को पहला सही लगता है ना दैट इज द राइट आंसर तो उसमें बने आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है सो इफ यू थिंक दैट सेंटेंस इज राइट then don't worry about the other sentences because then go with your conviction जो क्या लिखा है point number A as per clause 7 of part 1 of the first schedule or to the Chartered Accountants Act 1949 he shall not use a designation member of parliament in addition to that of a CA ये ही फर्स्ट वाला ही राइट आंसर है डायरेक्ट फर्स्ट वाला एन एमपी कैन नॉट यूज सीए फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल करंटली पीयूष गोयल इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट is also the ministry is also the minister of railways in India so I think he should be using the member of parliament in the card that he has or in any letterhead that he has he cannot use CA and MP together so this is the right answer now I understand that in the exam situation no now in such questions where appropriate answer is asked no whichever sentence you read and you feel कि हाँ ये appropriate है बस टिक मार्क करके आ जाने का डोंट वरी अबाउट आगे का पढ़ो मत क्यों क्या होएगा पता है यू विल रीड दिस अभी नेक्स्ट वाला लाइन खाली पढ़ते हैं देखते हैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ व्हाट विल हैपन सी व्हाट इज रिटन he shall not use a designation LLB in addition to that of CA as he has not enrolled as an advocate as per clause 7 of part 1 of the first schedule to the CA Act 1949 now what will happen I'll tell you अभी ये whether to enroll as an advocate, whether to not enroll as an advocate, whether a person who is LLB is also called as an advocate, ये सब questions है ना तुम लोग के professional ethics में covered नहीं है. So this is just a what you call a blinder or rocket shot that ICA has put. And just to try to confuse you so that you also think कि हाँ यार LLB और CA भी साथ में use नहीं करना चाहिए हाँ हाँ ये sentence भी right ही लग रहा है चलो आगे पढ़ लेते हैं then you will go on reading the C part also D part also लास्ट में क्या होगा पता है I'll tell you what will happen you will feel all the answers are correct only तो you cannot tick mark all four no so इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ always understand sometimes no the most sure answer that you will be that is this point number 1 in my notes also in most I'm not telling about my notes any faculty's notes you will use no you will see this line directly that a person who is a member of parliament cannot add chartered accountant in front of his with the designation MP that they cannot use clear है यहाँ तक simple यहाँ पे so this is in relation to this part तो हमेशा जो first answer दिखे ना right उसको अपने को tick mark करना है बोलो anyone any queries how will you come to know which option to read first in such a question you have to read ABCD order only but you will have to ask yourself whether ये मैंने properly मेरे notes में देखा था कि नहीं देखा था because 100% will be there in the notes तो you have to ask yourself मेरे notes में ये देखा था कि नहीं देखा था मैंने so that advocate वाला point I'm giving you in writing that it will not be in any of the notes because वो point अपने professional ethics के content में ही नहीं है okay so you'll have to ask yourself अभी वो MP वाला point ना will always be there in the notes it is a very important part of professional ethics एक मिनट everybody understanding this सब लोग reply करो chat पे please are you understanding this great
Okay, chalo. Let's move on to the next part. Let's see. 1 second. Please wait. Okay. Acha, next. In accordance with the provisions of Companies Act 2013, ठीक है, now suddenly law भी आ गया picture में. Companies Act 2013, with respect to investigation into the affairs of a company, so it pertains to the investigation chapter. They have asked who can be appointed as an inspector. ठीक है. Now always understand, inspector is always an individual. ठीक है, always an individual because inspector है. ठीक है, it is not a firm. आगे जो क्या लिखा है, राज एंड एसोसिएट्स अ फर्म, तो ये फर्म है तो डेफिनेटली नो रहेगा. सीए राहुल हो सकता है. Mihim Private Limited, a body corporate, it cannot be because it is always an individual. And ABC and Partners LLP, a body corporate, so definitely no because it's an LLP, so not आएगा. So answer will be 2. अभी ऑप्शन देखो कैसे दिया उन्होंने, 1, 3 and 4 no, 1 only नहीं, 3 and 4 नहीं, तो आंसर आएगा only 2 only. Answer will be 2 only. 1 second, are you understanding this? Clear यहाँ तक? Okay. Everyone, please reply in the chat area. Please tell me, did you understand this? ठीक है, inspector now, so it will always be an individual only. ठीक है, simple one. Now these questions are very easy. So if such questions come in the exam, then it is बल्ले बल्ले, अच्छी बात है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Okay, come to this part. This is again most favorite chapter in the world, that is company audit. आ जाओ. This Shrutika should be able to answer. Shrutika had attended my company audit. देखो क्या लिखा है. WAS Limited, a subsidiary of KEP Limited, is engaged in the business of manufacturing fertilizers. देखो क्या लिखा है. 15% shares of KEP Limited. ठीक है. KEP Limited, याद रखना. WAS Limited is a subsidiary of KEP Limited, and they have given you the information of this KEP Limited, and WAS Limited उसका क्या है, subsidiary है. They have said KEP Limited में 15% shares are held by the central government. ठीक है. 25% by the Kerala government. Okay, तो total हो गया यहाँ पे 40, and 20% by Karnataka government. Okay, so this tells you that KEP Limited becomes a government company. Why? Because more than or equal to 51% is held by the central government. ठीक है. And now that same section number, that is section 2 subsection 45, that defines government company, says that any company in which more than or equal to 51% is held by the central government or partly by the partly or the state government, or partly by central government and partly by the state government, then such company is a government company, and also subsidiary of government company is also a government company. So in our case, if KEP Limited is a government company and WAS Limited is a subsidiary of KEP Limited, then automatically WAS Limited will also become a government company. ये clear होना चाहिए, ये clear होना चाहिए, ये समझ में आएगा definition से. Now if this point is clear in your mind, then now देखो क्या पूछा है यहाँ पे, you are required to suggest which of the following statements would be correct. ठीक है. In relation to what? देखो क्या लिखा, they have been appointing what, ABC and Associates, a firm of chartered accountant, has been appointed as the, okay, first auditor के related. So they are asking question about the first auditor. So the first statutory auditor of the government company. So इसमें C&AG should appoint within 60 days होना चाहिए answer. So let's see. The first auditor of WAS Limited shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of registration. This should be the answer. यही आंसर होना चाहिए. आगे देखो क्या लिखा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 180 डेज. 180 डेज है, लेकिन 180 डेज यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल नहीं है. 180 डेज आता है इसमें गवर्नमेंट इसमें अपॉइंटमेंट में, बट दैट इज ओनली फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिटर. सो इफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज देयर, अगर ऐसे पूछा होता है इसमें क्वेश्चन की, इफ दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो दैट इज 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो देन दिस आंसर वुड हैव बीन राइट, बट यहाँ पे दे हैव आस्क्ड अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर, सो दैट इज 60 डेज. आगे का तो मतलब ही नहीं है, बिकॉज आगे सीएनडीजी अपॉइंट ही नहीं कर रहा. यहाँ पे ईजीएम को दिया है पावर अपॉइंट करने के लिए, और यहाँ पे उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ है. तो यहाँ पे दिस विल नॉट बी वैलिड एट ऑल. सो द आंसर विल बी ए. एवरीबॉडी प्लीज टेल मी इन द चैट एरिया. सिंपल, मैनेजेबल दिस वन आल्सो, वेरी इजी. Comfortable na till now? Okay, now we have completed 5 questions. Now in these 5 questions, do you have any specific query in relation to these 5 questions? Any MCQ related query that you have कि MCQs आएगा तो आंसर कैसे करना चाहिए? What should be the strategy? Any question that disturbs your mind in relation to MCQs, let me know.
All good so far. Good. These questions are easy. बराबर है. Even I agree. ठीक है. आगे देखते हैं. आ जाओ. Now they are giving a point here. Now this is that new NBFC part, NBFC fraud related part which they have included in the module. This is not an amendment, but it was recently added. ठीक है, but it was not part of the RTP amendment. उसके पहले उन्होंने उसको add कर दिया था. So they are asking during the audit of AMC Finance and NBFC, the auditor found that a fraud was committed by its employees amounting to 107.8 lakhs. That is basically 1.078 crores. ठीक है, ये clear होना चाहिए. So you have to understand that this is more than 1 crore का. आगे लिखा, the management of the company took severe action against the employees and the auditors took all necessary steps to report the fraud. Which among the following steps auditors should take with respect to the fraud committed by the employees of the NBFC? Now, इसके लिए ना you need the knowledge of this part. Now, this is a portion specific question. ठीक है, ये देखो ये वाला part. Now you have to read this part. ये वाला part पढ़ना है आपको. तो फ्रॉड के रिलेटेड उन्होंने दिया हुआ है कुछ, तो उसमें ना आई एम नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर थिंग, जो मेन अपने को चाहिए उसके रिलेटेड ही. देखो क्या लिखा, फ्रॉड इन्वॉल्विंग 1 crore एंड अबव where the amount involved in fraud is rupees 1 crore and above, the reports in the prescribed format shall be sent within how many weeks? 3 weeks from the date of the detection of the fraud to where? To the CFM cell, that is the Central Fraud Monitoring Cell of the RBI. बस अपने को इतना ही नॉलेज की जरूरत है ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. So here when you go, the first point they have given, report in prescribed form should be sent to CFM cell of RBI within 3 weeks. यहाँ पे दिया है कुछ और ही दिया है, विद इन अ वीक दिया हुआ है यहाँ पे विद इन 3 weeks दिया हुआ है, विच वी नीडेड दिया एज द आंसर. हियर दे हैव गिवन 21 days and here we have given 15 days. Now there will be a big confusion in your mind regarding these two. 21 days को है ना, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे मान के चलते हैं हाँ ये भी 3 weeks ही है ना, बराबर है, ये भी 3 weeks है, 21 days ऑल्सो 3 weeks, ऊपर भी 3 weeks ही दिया हुआ है, 7 into 3 21, तो ये और ये सेम ही रहेगा करके. नो, डोंट थिंक इन दैट मैनर. If they are given 3 weeks, then 3 weeks खत्म. Don't overthink कि इसमें ये क्यों है वो क्यों है करके, because there are this national holidays का कुछ issue आता है उसमें काउंटिंग में. So if they are given 3 weeks, then 3 weeks only. So the option here will be A. Did you understand this? यहाँ तक clear सब लोग को? Tell me. Okay. Hey, Radhika is also joined. Hi Radhika, how are you? Radhika was also there in the previous lecture. ठीक है, यहाँ तक clear? Okay. आगे बढ़ते हैं. Okay, as per regulation 20 of part D of schedule 2 SEBI LODR regulation, who among the following shall be appointed as the chairman of stakeholder relationship committee? Answer will be this, non-executive director. So याद रखना, अगर कभी भी ऐसे कोई कमिटी पूछा उन्होंने और पूछा कि कमिटी का हेड कौन रहेगा, और if the committee is related to the shareholders, no, shareholder या तो फिर पैसे के related रहेगा ना, always remember that 90% of the cases में the chairman will always be a non-executive director. So whenever such questions are asked, just remember that the non-executive director will be the chairman. So they have asked the chairman, so the option will be D here. So now again this is part of the portion side, मतलब जो अपना portion है उसके related है. Okay, that is question number 7. I'm going to the next one because this is just normal वाला question. हाँ, ये वाला question देखते हैं. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. This is excellent question because इसके लिए आपको ना SA 550 का knowledge होना जरूरी है. देखो क्या लिखा. Messrs. Ramraj and Associates have been appointed as statutory auditors of Venus Limited for the financial year 2019-20. During the year, the company has entered into some related party transactions. CA Ram, the engagement partner, has taken management representation. So, okay, so he went for management representation. That is basically, it's a 580 letter regarding the proper accounting, presentation, disclosures of such related party transaction. Management को पूछा आपने सब बरोबर किया क्या, अच्छे से किया क्या? मैनेजमेंट बोला हाँ हम लोगों ने सब अच्छे से किया है, बोला करेगा मैनेजमेंट ने. आगे, is there any further responsibility of CA Ram with respect to other procedures to be performed for related party transaction? So they have asked whether there are any other procedures कि खाली मैनेजमेंट को पूछ लिया तो काम हो जाएगा क्या, कि अपने को और भी other procedures करना चाहिए क्या. ठीक है, so now students always understand that management representation letter से ना, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर इज नेवर एवर सफिशिएंट. मतलब ऐसे 580 में जो अपन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं मैनेजमेंट का, दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नेवर एवर सफिशिएंट एविडेंस फॉर एनी काइंड ऑफ मैटर. ठीक है,
हाउएवर अपेरेंट इट मे बी, हाउएवर सिंपल इट मे बी, लेकिन ऑडिटर को खुद का तो कुछ काम करना ही पड़ेगा. आपने से मैनेजमेंट को पूछ लिया तो आपका ऑडिट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा. So first of all, your answer will be yes, other procedures have to be done. Yes, it has to be done. तो उन्होंने क्या पूछा है, whether other procedures, whether any other further responsibility is there or not. तो पहले yes, further responsibility is there or not. तो जहां पे भी no answer है ना, वो तुम लोग का eliminate हो जाएगा. यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, no, there is no further responsibility, eliminated. Further responsibility है, यहाँ पे भी क्या आएगा, eliminated. Further responsibility है. तो बचा अपना सी एंड डी में से एक. तो अपना क्या हो गया, वी यूज कौन बनेगा करोड़पति का 50-50 का ऑप्शन, वेयर 2 ऑप्शन विल बी डिलीटेड. तो मैंने तुम लोग को डिलीट करके दे दिया है. अभी देखते हैं ये दोनों में से कौन सा आएगा. देखते हैं क्या लिखा. यहाँ पे लिखा दी ऑडिट फर्म हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई, assess and respond to the risk of material misstatement arising from the entity's failure to appropriately account for related party relationships, transaction and balances, and obtaining merely or management representation letter can be considered to be sufficient. यहाँ पे cannot आना चाहिए, एक मिनट. यहाँ पे cannot आना चाहिए. There is a mistake, printing mistake. Obtaining merely management representation cannot be considered to be sufficient appropriate audit evidence. Cannot be considered to be sufficient appropriate audit evidence. ठीक है, ऐसे होना चाहिए. आगे, yes, the auditor has a responsibility to detect fraud and error. याद रखो हमेशा, ऑडिटर का कभी भी फ्रॉड एंड एरर ढूंढने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट में होता नहीं है. ऑडिटर अपना काम करेगा एंड इन द कोर्स ऑफ हिज फंक्शनिंग इफ ही फाइंड्स फ्रॉड और एरर देन द ऑडिटर विल टेक नेसेसरी एक्शन. बट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड ढूंढना, ये कभी नहीं है. सो द ऑप्शन इन दिस केस विल बी ऑप्शन नंबर सी. Now I want everybody's reply in this. Did you understand this one? Because this was little घुमा फिरा के. Okay, clear यहाँ तक? Excellent. ठीक है, let's go ahead. Okay, next one. CA Ajay was appointed as the statutory auditor of TUV Limited at Delhi. ठीक है, so he was appointed as the statutory auditor of TUV Limited at Delhi. TUV Limited has a branch office at Pune. तो branch auditor का कुछ रहेगा, देखो क्या लिखा है. A branch auditor CA Suresh. So Ajay is the statutory auditor and Suresh is the branch auditor. Was appointed to conduct the audit of Pune branch of TUV Limited. ठीक है. CA Ajay provided CA Suresh with a questionnaire. तो अजय ने क्वेश्चनर बना के भेजा कि आप प्लीज ये क्वेश्चन आंसर करो so that I can understand the functioning of the branch, because ultimately the responsibility of the branch is with the statutory auditor. यार लास्ट में कुछ गड़बड़ हुआ तो statutory auditor पे blame आएगा. So यहाँ पे एक क्वेश्चनर भेजा उसने regarding the details of the branch office of certain specific accounts and balances to be filled in by CA Suresh in which indication of material misstatement are involved. So proper क्वेश्चनर बना के भेजा किसने, अजय ने भेजा सुरेश को. अजय is the statutory auditor, Suresh is the branch auditor. However, CA Suresh denied, मना कर दिया, बोला तेल लगाने गया. Denied to fill such questionnaire. He said, I am not going to fill such questionnaire. I am also Oh. So we cannot hear you and not even see your screen. Smriti, there is some technical issues on his end. Even though he is Can't hear you, Shivam. even though he's live over here, we cannot see him. Might be some internet issue. Okay, I'll check with sir and get back.
क्या पूछते हैं? अंकल को अगर नहीं ना अंकल ने Okay, Smriti, are you able to hear me? Yes, sir. Chalo, major internet issues today. Sorry for this, guys. Very, very sorry. Can't help. 1 second, please wait. Okay, chalo, let me just quickly start. 1 second, wait. Okay, question number 9. Let's start again. देखते क्या आएगा. They have given here CA Ajay. एक minute. Can you see the screen and can you hear me, Smriti? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's see. CA Ajay was appointed as the statutory auditor of TUV Limited at Delhi. Okay, so he was appointed as the statutory auditor of TUV Limited. And then they have given that TUV Limited has a branch office at Pune. Okay, so branch auditor was appointed. Who was appointed? CA Suresh. So branch auditor CA Suresh was appointed to conduct the audit of the Pune branch of TUV Limited. CA Ajay provided CA Suresh with a questionnaire. So he gave a questionnaire to CA Suresh. He please bhar ke dena. I want to know about the branch. And he's right also because the main responsibility is with the statutory auditor regarding the branch audit also. Regarding the details of the branch office of certain specific amounts and balances to be filled by CA Suresh in which indication of material misstatements are involved. CA Suresh ने मना कर दिया. CA Suresh denied to fill such questionnaire. उसने मना कर दिया, बोला मैं नहीं भरूंगा करके. Maybe he got more marks in CA final than CA Ajay. That is why he said this. As he explained that CA Ajay, as the principal auditor, has no such right. He said कि घर पे जाओ, मैं ये सब दे रहा नहीं हूँ भर के. My time is also very important. Which is the relevant essay and which of the following course of action is correct in this regard? Okay. Now, when you see the options, no, students see they have given you 600, 610, 600 and 610. ठीक है, ऐसे दिया हो ABCD में. Of course, 610 will not be applicable here. कारण क्या है यहाँ पे? Because it is not internal audit related, it is branch audit related. So that is 600 के अंदर आएगा. So 600 is relevant. So by way of elimination, the same 50-50 option of KBC, we eliminated two options B and D. So now we are dealing with A and C. अभी A and C में देखो क्या लिखा है. A में लिखा है SA 600 is relevant. CA Ajay is correct in asking for information from CA Suresh through a questionnaire. So is this answer right? Answer is yes. CA Ajay is right. No, because he is a statutory auditor. He can ask for information. C में लिखा है SA 600 is relevant. CA Suresh is correct in denying filling such questionnaire as CA Ajay, instead of asking CA Suresh to send the filled up questionnaire, should himself verify the specific branch details as indication of material misstatement is there. कैसे? मतलब यहाँ पे वो हेल्प मांग रहा है ब्रांच ऑडिटर से, और ब्रांच ऑडिटर कैसे काम नहीं करेगा उसके लिए, तो यहाँ पे उसको हेल्प करना ही पड़ेगा. सो द ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. एक मिनट, आई जस्ट वांट टू आस्क एवरीवन, वी गॉट इंटरप्टेड. आर यू क्लियर टिल हियर नाउ? प्लीज टेल मी in the chat area, everyone.
If you have any queries, you can just say I have a query karke, and then you can unmute yourself and say. Just don't say directly because it will interrupt my speech. Just ask in the chat area, I have a query, then you can ask your query using the sound, using the unmute button. Okay, great. ठीक है? Simple point, अच्छा point, very simple, standard specific question. Okay, let's go to the next one. देखते क्या लिखा again, a simple standard specific question. ठीक है? Now this Radhika and Ruben and Pranal, you guys should be able to answer. नहीं तो I'll be very disappointed. Messrs. Vian Viraj and Associates are statutory auditors of ABC Limited for the financial year 1920. The company has a strong internal control team. So they have a strong internal control team already. During the course of audit, CA Vian, the engagement partner, found that the company has factories all across the country. In order to verify the wages expenses at all the factories, CA Vian decided to use internal audit team of the company. तो ये हो गया अपना यहाँ पे this line note tells you that CA Vian decided to use the internal audit team of the company. मतलब he wants to use the internal audit team, that is direct assistance वाला concept आ जाएगा, that is 610 वाले area में. He accordingly discussed the same with Mr. Gaurang, the chief internal auditor of ABC Limited. So he discussed that with him to provide him a report of the wages expenses across all factories. Which of the following requirements of SA 610 are required to be fulfilled by CA Vian prior to direct assistance? देखो क्या लिखा prior to direct assistance. So there is an answer directly where activities to be done prior are given. ठीक है SA 610 के अंदर. If you are taking direct assistance then. पहले तो क्या लिखा है CA Vian should obtain a written agreement from the management of ABC that internal audit team will be allowed to follow the statutory auditor's instructions. बराबर है. CA Vian should obtain a written agreement from Mr. Gaurang that his team will keep the matters confidential. बाद में आगे दिया both A and B, and finally दिया given CA Vian can use direct assistance of the internal audit team after discussing the same with the management. No prior written agreement is required. This is definitely not. Written agreement की जरूरत है. और ये ऊपर के दोनों पॉइंट्स की भी जरूरत है. तो ऑप्शन विल बी डेफिनेटली व्हाट? ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल राइट आंसर. एक मिनट, एवरीवन क्लियर प्लीज? इफ यू आर क्लियर देन प्लीज टाइप क्लियर करके, प्लीज टाइप क्लियर. क्या बात है राधिका, प्रणल एंड रुबिन, थैंक यू यार. वेरी इजी नो राधिका, प्रणल, रुबिन टू डायरेक्टली सी द ICI's आंसर एंड राइट द ऑप्शन हियर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. राधिका इज टेलिंग यस आल्सो. व्हाट यार राधिका. ठीक है. नहीं, आई वाज होपिंग यू गाइस विल आंसर. ठीक है. अरे आई एम जोकिंग बाबा. ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड टैकल दिस वन. एक सेकंड रुकना. ओके ओके, 1 सेकंड. वी आर डन विद 10 राइट. हाँ, अभी इसके बाद ना यू हैव दिस इंटीग्रेटेड MCQs. आई थिंक एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर दैट ओनली कि सर वो कराओ. ये तो एकदम मामूली बायात का खेल था हमारा. अभी आप पहले वो कराओ, उसमें देखेंगे कि कैसे जम रहा है हम लोगों की नहीं जम रहा है. ठीक है. So let's go with that. Just give me 1 second. Just give me 1 second. Please wait. I just open that document. 1 second. Please wait. Okay, here we are. 1 second. Okay, are you guys able to see it? Please go to the chat area. Please type yes. Are you able to see the document that I've shared? Please type yes. Okay, great. Fine. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's see. Now we come to the big questions and that is covered 8, 9, 10. ये हो गया अपना वियान वाला और ये अपन आगे ये वाले क्वेश्चन पे. चलो देखते हैं अभी इसका आंसर कैसा आएगा. Okay, let's attack this and let's see कैसे आने वाला है. Let's see. अभी now whenever these integrated questions are coming, now what you have to start doing is you have to put a what you call a radar in your head. Radar मतलब क्या? आप लोगों को ना स्टार्टिंग से गेस करना चाहिए कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं नीचे जब भी क्वेश्चंस दिया रहेगा तो. या मैं तुम लोगों को बेस्ट बोलूं, बेस्ट लाइक दिस इज जो कैट का एग्जाम देते हैं उन लोग यही टेक्निक यूज करते हैं. दे फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस एंड देन दे सी कि अच्छा देखते कि इसका आंसर कैसे आएगा करके ऊपर वाले चीज पढ़ के. यू कैन यूज दैट आल्सो. दोनों में से कोई भी चलेगा, बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस देन यू कैन प्रैक्टिस दैट रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गोइंग टू द मेन पैराग्राफ एंड सीइंग व्हाट द आंसर्स वर. और लेट्स गो द ट्रेडिशनल वे एंड देन सी की हाउ द आंसर हैज टू बी टैकल्ड. सो वी विल गो द ट्रेडिशनल वे. देखो क्या लिखा. Minsan Limited, an unlisted company in South India,
is engaged in the business of spice oil extraction. ठीक है. Total paid up capital is 9 crores. Okay. Details of annual turnover and profit of the company for the last 3 years are given below. So turnover इतना था and first year में profit था, second year में भी profit था, लेकिन profit बहुत भारी कम हो गया, 50 करोड़ से it came to 1 crore only. And third year में it went for a loss of 10.25 crores and the turnover they are given provisional. ठीक है. Maybe we are in the third year right now. अभी आगे दिया हुआ है. The company is using conventional method. So याद रखना, see this has gone into a loss. So whenever there is a loss, recent loss, so understand that going concern का issue आ सकता है. That the company may not be a going concern now because 10.25 crores का loss हो गया. So always keep that in mind if there is a recent loss. The company is using conventional method of for extraction of oil from spices. This requires more human intervention and hence the cost of production is high as compared to innovative method used by other new companies. तो इन लोग आदमी लोग को यूज करता है, लोग मशीन लोग को यूज करता है, मशीन थकता नहीं है, आदमी थक जाता है. तो production of those machines is much faster, much higher, more higher than the humans. आगे. So the cost in this case is high for this company and उनके competitors का cost कम है. Though the company had significant growth in the past years, बराबर है, we can see 50.16 crores is not a joke in 2018 ending. So they were growing. It has not done well over the last 2 financial years due to competition. We can see that. We can see that. यहाँ पे company का band बज गया है यहाँ पे. We can see that. Clear है? आगे. The new competitor that is Natural Extracts Limited had come into the market during the year 2018 and by the end of the March 2019 they captured around 75% of the market share. So 75% of the market competitor के पास चला गया by offering the products at a क्या लिखा है यहाँ पे reduced price. Okay, because they were using machines. They use new machinery which allows whole range of automated extraction method, thus minimizing manual steps and reducing the cost of labor. Okay, fine. तो cost of labor अगर नहीं रहेगा तो खर्चा कम रहेगा. You remember when we did in costing in IPC, you did a subject called material costing. तो material costing या तो फिर your cost sheet. Cost sheet में you have direct material, direct labor, direct expenses. अभी अपना direct labor इनको हो रहा ही नहीं है, मतलब कम आ रहा है बहुत. So their automatically their prime cost is very less. आगे. In order to reduce cost of production and thereby recapture the market, the management of Minsan Limited has planned to erect a new plant with a automatic machine. The estimated cost of plant and machinery is क्या लिखा है पे 90 lakhs. So they said कि okay, they are planning to buy a 90 lakh का machine. लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, इन लोग तो लॉस में चल रहे हैं. तो क्या लिखा है? The company approached SA Bank Limited for the term loan of 80 lakhs, okay, which would be repaid in 5 years. On 28 December 2019, the bank had sanctioned the loan and disbursed 40 lakhs. ठीक है, तो 40 lakhs का इनको sanctioning मिल गया till 31st March 2020. तो we are seeking 80 lakhs का loan and उन्होंने 40 lakhs disburse कर दिया. Minsan Limited has appointed Messrs. Check and Check Chartered Accountants as auditors of the company at its AGM held on 18/9/2019 for a period of 5 years. Okay. As agreed, the audit team commenced their audit work for the year 1920 in February 2020. Okay. And completed the work by May 2020. Fast auditor थे यार एकदम, यहाँ पे Feb में काम चालू कर दिया और May में काम भी खत्म, done. The audit team submitted following findings to the engagement partners. So all these details were given. देखते क्या क्या details दिया है यहाँ पे. PX Limited, one of the material suppliers, filed a case. So company का against a case on 12/9/2019 for a compensation of 3 crores. याद रखना, this can also affect the going concern assumption. आगे, company has made an estimate of allowance of debtors 5%. याद रखना, this is an estimate, that is accounting estimate वाला अपना standard. So that will also be affected here. That is say 540. आगे लिखा है यहाँ पे 70% of the value of inventory was only covered in physical verification during 1920 due to outbreak of novel coronavirus COVID-19 and subsequent lockdown thereof. So 70% of inventory was covered in our physical verification. ठीक है. तो 31 मार्च को वेरिफिकेशन किया रहेगा 31 मार्च के आसपास, तभी 70% ही चेकिंग कर पाए. Company has a show cause notice from the State Pollution Control Board for the contravention of the provisions of hazardous and waste management rules. तो कंपनी का बैन यहाँ पे ही बजा पड़ा है. यहाँ पे इनको नोटिस भी मिल गया है कि आपने इतने क्या बोलते हैं पोल्यूशन कंटेनिंग मटेरियल तो उन्होंने क्यों डाला रिवर में या बाहर वेस्ट क्यों किया यहाँ पे. सो कंपनी का रिमेंबर, कंपनी इज अंडर अ प्रॉब्लम हियर, अ केस हैज बीन फाइल्ड. स्टेट कंट्रोल बोर्ड का ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऊपर लॉस भी था. आगे 3 incidents of fraud. Okay, ये हो गया icing on the cake. 3 incidents of fraud notice, total 1.02 crores. Fraud committed by the purchase manager 85 lakhs, by account manager 15 lakhs and by cashier कितना यहाँ पे 2 lakhs. ठीक है, तो of course 1.02 crore का तो यहाँ पे लॉस ही है, यहाँ पे फ्रॉड भी है.
आगे, as an auditor of Minsan Limited for the year 1920, following questions based on the facts given in the above paragraph. तो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते क्या लिखा. Though the company had significant growth in the past years, it has not done well over the last 2 financial years. Okay, that we know. As per SA 570, आ गया going concern. There are certain events or conditions that individually or collectively make a significant doubt about the going concern assumptions. In order to assess whether Minsan Limited is a going concern or not, which of the following audit procedures should not be performed? So now you should know what audit procedures are valid, are not valid. याद रखना, auditor does the audit work, audit procedures based on historical data. क्या बोल रहा हूँ मैं? Based on historical data. Auditor will never comment on the future. ठीक है? Only if the auditor has been appointed to do to give a statement on prospective financial statements, तो ही auditor देगा अपना comment regarding the future. नहीं तो auditor कभी भी भविष्यवाणी करता नहीं है. He is not an astrologer. ठीक है? तो देखो क्या लिखा. एनालिसिस, तो वी हैव टू बेसिकली से कि 570 में अपन क्या क्या क्वेश्चंस देखेंगे कि 570 का कंसर्न है कि नहीं है. तो पहले देखो क्या लिखा. एनालिसिस एंड डिस्कस, एनालाइज एंड डिस्कस आना चाहिए. एनालाइज एंड डिस्कस विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू फाइंड आउट वेदर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी वुड एनेबल द कंपनी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि कंपनी को पूछो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करने वाले हो आप, बिकॉज दैट विल टेल अस कि इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूसिंग, दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज it means the profit will increase and the going concern assumption will be, little, going concern assumption will be more valid. Aage, inquire the company's legal counsel regarding the existence of legal litigation and claim against the company, reasonableness of the management assessments of their outcome and estimate of their, क्या लिखा है, financial implication. तो legal counsel को पूछेंगे जो केस फाइल किया गया उसका क्या लफड़ा चल रहा है, कंपनी डूब सकती है क्या, ये सब पूछेंगे उसको. आगे, evaluating the management's future plan and strategy to increase the market share of the product. याद रखना, the competitor has taken over the market share, so we are concerned कि market share management किस तरीके से बढ़ा रही है. ठीक है, now remember this is not asking about the future, because this is just asking the company future में आप grow कैसे करने वाले हो, because that will give us an idea कि management का future plan क्या है. because future plan जैसा रहेगा ना, उसके basis पे auditor decide करेगा कंपनी आगे तक टिकेगी नहीं टिकेगी. that is basically what the auditor checks in the going concern assumption के related. लास्ट में तो क्या लिखा है, एनालाइज एंड डिस्कस. एनालिसिस एंड डिस्कस नहीं आएगा. एनालाइज एंड डिस्कस द कंपनीज कैश फ्लो एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस इयर्स विद द, क्या लिखा है, प्रोजेक्टेड अकाउंट्स. नाउ हियर दे आर सेइंग कि कंपनी का कैश फ्लो विल डिस्कस विद द प्रोजेक्टेड अकाउंट्स. कंपनी का जो आगे उन्होंने ग्रोथ कितना बताया उसके हिसाब से. अभी देखो ये जो प्रोजेक्टेड अकाउंट्स ना, प्रोजेक्टेड अकाउंट्स ये बताने के लिए तो कंपनी कुछ भी बता सकती है कि हम लोग 10 करोड़ कमाएंगे, 20 करोड़ कमाएंगे. आगे चल के देखो 5 साल के आप एक काम कर लो, कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, हम लोग 100 करोड़ कमाएंगे, ऐसे पकाएंगे हम लोग बैठ के. बट वी नीड नॉट बाई इट. अभी लीगल काउंसिल को पूछना सही है क्या, आंसर इज राइट, यस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा क्या, आंसर इज यस. थर्ड, अगर मार्केट शेयर अपना इंक्रीज हुआ तो विल द कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, आंसर इज यस. सो कंपनी कैन बी आउट ऑफ दिस मेस दैट द कंपनी इज इन. But if you merely discuss the cash flow and profit of the previous years with the projected accounts, then how is that helping the company? That will not help the company in the going concern assumption part. So the option has to be option number D. Option number D. एक minute. Is everybody understanding what I'm trying to say? Can you please tell me in the chat area? This was a big one, that's why. Please tell me. Please tell me in the chat area. शिवम, your वहां से ना काफी आवाज आ रहा है यार. कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ऐसा लग रहा है यू आर सिटिंग इन अ हेलीकॉप्टर. शिवम, शिवम, is it possible to mute yourself? Oh, sir, I'll talk to him and I'll ask him to mute. You can meanwhile. Please. Yeah, आवाज yes, आ रहा sir. है इसके लिए. ठीक है. Okay, everyone, what do you think? Understood this one? एक मिनट. I want to ask. I'm asking you seriously, यार. Tell me, did you understand this? कि नहीं तो बोलो कि क्या नहीं समझा. सब मन में सोच रहे सर वो 1 मार्क का क्वेश्चन ही ठीक था सर, ये 2 मार्क का लोग पूछते क्यों है सर. ये सब देखा जाएगा जब सीए बनेंगे उसके बाद. इतनी कठिनाई अभी से. आ जाओ. ओके, ग्रेट. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट.
Now next part is very straightforward, very simple. You should know this. You should know this. ठीक है? This we have already seen. SA 540. देखो क्या लिखा है. Company has made an estimate of allowance of debtors 5%. Some financial statement items cannot be measured precisely, but can only be क्या लिखा है estimated. The nature and reliability of information available to management to support the making of accounting estimate varies widely, which thereby affects the degree of estimating uncertainty associated with the accounting estimate. Perfect. Please advise which among the following may have higher estimate uncertainty. See the language, higher estimate uncertainty and higher risk as per SA 540. So they are telling you कि higher estimate uncertainty कब रहेगा बोल सकते हैं. ठीक है, तो you have to know there is a separate answer for this in SA 540. Of course I cannot tease the concept right now, but there is a separate answer in relation to this. ठीक है, उसमें पहले लिखा है यहाँ पे जजमेंट्स अबाउट द आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन विद पीएक्स लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनी. नाउ दिस पॉइंट, नो दिस पॉइंट, पेंडिंग लिटिगेशन, ये लिटिगेशन का और ये एस्टिमेट का ना कोई भी नाता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है. इट विल नॉट बी रिलेटेड रिगार्डिंग दिस पेंडिंग लिटिगेशन, और इसका कोई भी नाता नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द आंसर विच शुड बी देयर. आगे देख लेते हैं. लेकिन estimate made for inventory obsolescence that are frequently made and updated. So yes, this is a point that is there in that answer for high estimate uncertainty. A model used to measure the accounting estimates is well known and assumptions to the model are observable in marketplace. Yes, this is also one of the options. Again, accounting estimate made for allowance of doubtful debts, where the result of the auditors review of the similar accounting estimates made in the prior financial statements do not indicate any substantial difference between the original accounting estimate and the actual outcome. So that again, this means that यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट विल बी बेस्ड ऑन दीज 3 पॉइंट्स. ठीक है, हायर एस्टिमेट रहेगा तो अपन ये 3 पॉइंट में अगर कोई भी वैलिड रहेगा तो वील से दैट यस देयर इज हायर एस्टिमेट अनसर्टेनिटी. बट ये जो चीज है ना यहाँ पे पेंडिंग लिटिगेशन की वजह से ये डिसाइड कर रहे हैं अपन, इसका और इसका कोई नाता नहीं है. तो ये आंसर हैज टू बी आंसर नंबर ए. पॉइंट नंबर ए हैज टू बी द आंसर. पेंडिंग लिटिगेशन और ये जो डेटर्स का हम लोग बोल रहे हैं, इसका कोई भी नाता नहीं है. देयर इज नो रिलेशन इन रिलेशन टू दीज टू. Everybody, please tell me whether you understood. Please tell me yes. अरे शिवम शर्मा, please switch off the sound यार. ठीक है, वंस अगेन मैं बोलता हूँ. सी यहाँ पे हुआ यहाँ पे प्रणल देखो, ये जजमेंट्स अबाउट द आउटकम पेंडिंग लिटिगेशन. दिस पेंडिंग लिटिगेशन हैज नथिंग टू डू विद द डेटर्स पार्ट. पेंडिंग लिटिगेशन हैज नथिंग टू डू विद द डेटर्स पार्ट. नथिंग एट ऑल. डेटर्स का मैटर इज इन रिलेशन टू एस्टिमेट्स. पेंडिंग लिटिगेशन इज विल मे बी अफेक्ट SA 501 और इट मे आल्सो अफेक्ट व्हाट योर गोइंग कंसर्न, दैट इज SA 570. बट ये कोई भी एंगल से मेरे SA 540 को अफेक्ट नहीं करेगा. So मेरा higher estimate uncertainty cannot be decided based on this pending litigation because these two matters are not connected. These two matters are not connected. Pranal clear यहाँ पे? ठीक है, great. Okay. Not connected यहाँ पे. Okay, चलो आगे आते हैं. देखो देखते क्या लिखा है यहाँ पे. Let's see this part. Now in this note, this will really these MCQs now, these really test your concept now. So that is why MCQs I love. I know students hate because ऑडिट में फेंकने का जो अपने को ऑप्शन या मजा आता था वो अभी नहीं है. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. तो दिस इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अभी देखो, ये देखो क्वेश्चन देखते क्या लिखा. माय रिक्वेस्ट इज स्टूडेंट्स डोंट सी द आंसर फॉर दिस पार्ट. ये पार्ट का आंसर मत देखना एंड ट्राई टू आंसर योरसेल्फ. देन आई विल टेल यू द लॉजिक क्या है इसका. डोंट वरी. द कंपनी इन द नोट्स accompanying its financial statement disclose the existence of suit filed against the company with full details. Okay. Based on the evidence, audit evidence obtained, it is necessary to draw users' attention to the matters presented in the financial statement. तो यूजर का अटेंशन हमको देना पड़ेगा इस पे. By way of clear additional communication, they have given their clear additional communication as there is an uncertainty relating to the future outcome of the litigation. तो clearly यहाँ पे दिया हुआ है. In this situation, which of the following reporting option would be correct if the auditor is satisfied with the conclusions reached by the management? तो देखो याद रखो, the auditor is satisfied with the conclusions reached by the management. मतलब auditor यहाँ पे dissatisfied नहीं है बिल्कुल भी. Auditor is happy, just that the auditor wants to give an additional communication. आगे लिखा है and this matter is fundamental to the reader of the financial statement. मतलब वो जो अपन यहाँ पे ये देना चाहते हैं, draw users attention, that is fundamental to the user. मतलब ये बताना उनको बहुत जरूरी है
लेकिन फिर भी उन्होंने क्लियरली लिखा है इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद द कंक्लूजन रीच्ड बाय द मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे कहीं भी तरीके से Sir, we are not able to hear you. अरे शिवम पंखा बंद कर यार। Okay, my dear students, 1 minute, please wait. Okay, I think question was read. That was what one of the students told me right now. Question was read. ठीक है, now understand the logic. See, listen to this. हमेशा याद रखो 706 and 705, they both hate each other. They are the biggest rivals. 706 and 705, they are Chennai Super Kings and Mumbai Indians. They don't like each other. अभी चेन्नई नीचे है तो मुंबई वाले अगर जीते या हारे, मुंबई को तो खुशी होती है बिकॉज चेन्नई ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सब मन में सोच रहे हैं कार्तिक सर आप तो अय्यर हो, तो आप किसको सपोर्ट करते हो पहले वो बताओ। अरे आई एम मुंबई बॉय यार, आई एम ऑलवेज सपोर्ट मुंबई ओनली। तो सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो always remember 705 and 706 always hate each other, मतलब उन लोग कभी भी coexist नहीं करेगा, कभी भी नहीं। तो याद रखो यहाँ पे if they are saying that the auditor is satisfied with the conclusions reached by the management, it means that the auditor is very happy with the conclusions reached by the management, the auditor is going to give a clean report। but यहाँ पे clearly लिखा है कि auditor को यहाँ पे ना clear additional communication देना है for bringing the user's attention and it is fundamental to the reader of the financial statement, मतलब the auditor wants to highlight some matter। अगर ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट दे रहा है ना तो हाईलाइट करने के लिए ना दो ऑप्शन है। एक है, अरे यार ये किसका आवाज आ रहा है यार, कौन कर रहा है यार, भारी भारी छोड़ रहा है कोई। हु इज दिस? शिवम? सर आपके अलावा से वही है जो म्यूटेड नहीं है। करेक्ट, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है पता है, वो इतनी आवाज निकाल रहा है, स्टूडेंट को लगेगा कि मेरे से आवाज आ रहा है, वो गलत है। so that is the main problem. No sir, I had called him also but he's not taking my call. I'm trying to reach him sir. But if you are this thing, I don't think we are having any issue. Is it possible to remove him? No or sir. is he a student? Is he a student? No, he's not a final student but he is the host so I cannot remove him. He'll have to himself leave the meeting. Oh, got it, I understand. Or maybe Hetal can try. Hetal is the co-host. Hetal, please try and get back to us with that. So meanwhile, I think we can continue till the time we try to reach him. Yeah. Yes. Continuing. ठीक है, so understand this. यहाँ पे आ रहा है fundamental to the reader of the financial statements. So always remember that see modified opinion that is 705 and the emphasis of matter paragraph, other matter paragraph that is 706, they can never coexist. Can never. ऐसे समझो तुम लोग कि अगर ऑडिटर को कुछ हाईलाइट करना रहेगा ना और अगर अपन क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं तो क्लीन रिपोर्ट के साथ साथ 706 आ सकता है। लेकिन अगर ऑडिटर को कुछ हाईलाइट करना रहेगा और अगर मैटर बहुत बड़ा है वैसे भी, मतलब इट इज ऑलरेडी गॉन इनटू द मॉडिफाइड ओपिनियन, तो वैसे भी वो अपने बेसिस फॉर ओपिनियन में 705 में वो हाईलाइट होने ही वाला है। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में 705 में वो हाईलाइट होने ही वाला है वैसे भी। तो ऑडिटर को कभी भी 705 और 706 कभी भी साथ में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कि यहाँ पे ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लीन रिपोर्ट तो देना ही देना है। ठीक है, साथ में अपने को हाईलाइट भी करना है, मतलब क्लीन रिपोर्ट प्लस एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। अभी एग्जाम में एक और चीज,
ये क्वेश्चन में वो दिया नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को अवेयर करता हूँ. If the matter जिस पे अपने को highlight करना है, मतलब auditor is giving a clean report and the auditor has to highlight, and the matter on which we have to highlight, if that is pertaining to the financial statement, then the auditor will give a emphasis of matter paragraph to highlight the matter. But if it is a matter related to his auditor, for example, अपने को जो documents थे check करने के लिए वो company से late मिला, अपन ने audit का काम ही late join किया है, so we have very less time to do the audit, so we want to highlight that to the shareholders. Now this is pertaining not to the financial statement, this is pertaining to the auditor's work. अभी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड रहेगा ना हाईलाइट, तो दैट इज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. बट इफ इट इज रिलेटेड टू द ऑडिटर्स वर्क, नो, देन वी यूज समथिंग कॉल्ड एज अदर मैटर पैराग्राफ. बोथ आर कवर्ड इन 706. तो यहाँ पे ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ मैं. फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या लिखा है, इंक्लूड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैविंग क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड इश्यू अ क्वालिफाइड ओपिनियन. नो, डेफिनेटली नॉट. क्वालिफाइड ओपिनियन अगर मैं दे रहा हूँ, दैट इज 705, उसके साथ साथ कभी भी लाइफ में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आने का चांस ही नहीं है. एंड प्लस अपन क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे ही नहीं, बिकॉज ऑडिटर इज सेटिस्फाइड यहाँ पे, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. दूसरा, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑडिटर इज सेटिस्फाइड. बेस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ऑडिटर इज सेटिस्फाइड. लास्ट में पढ़ते हैं, include an emphasis of matter paragraph in auditor's report having a clear reference to the matter being emphasized and to where disclosures that fully describe the matter can be found in the financial statement. The option has to be option number D, in my opinion. Option has to be option number D. एक मिनट, सब लोगों को समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है from that audit report chapter, that is 700, 701, 705, 706, 710 वाले areas. Are you guys understanding? Very, very clear, no doubt at all. Please tell me. Please tell me. Be frank. Okay. Okay, great. ठीक है, excellent. Okay, next point. Let's see. आ जाओ 14 पे आ जाता है. देखते क्या लिखा. कंपनी गॉट अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. पता है ये, उन्होंने नोटिस भेजा था. एज पर एसएस 250 द ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस with other laws and regulations that may have a material effect on the financial statements. As the audit team of the company became aware of information concerning an instance of non-compliance with law, what would not be the audit procedure to be performed? उन्होंने लिखा है what would not be the audit procedures to be performed. पहले लिखा हुआ है, understand the nature of the act and circumstances in which it has occurred and obtain further information to evaluate the possible effects of the financial statement. ठीक है, they have given this point. ठीक है, तो they are telling you understand the nature of the act, क्या क्या हो गया है और क्या क्या इशू आ गया है. ठीक है, तो we are trying to understand the law. Now just ask yourself, can this be an audit procedure? Answer is yes. You are understanding the nature of the act and circumstances. Yes, it can be part of the audit procedure. याद रखना, they have asked us what would not be audit procedure. Okay, आगे देखते क्या लिखा. Discuss the matter with the management, and if they do not provide sufficient information and if the effect of non-compliance seems to be material, legal advice may be obtained. बरोबर है, that we will talk to the management, and if they don't provide us information, then we will talk to the legal advisors. आगे, monitoring the legal requirement and compliance with code of conduct and ensuring that operating procedures are designed. मतलब उन लोग क्या बोल रहे हैं, अपन को मॉनिटर करना पड़ेगा कंपनी का लीगल रिक्वायरमेंट क्या है. एज ऑडिटर्स वी हैव टू मॉनिटर द कंपनीज लीगल रिक्वायरमेंट एंड इंश्योर दैट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर डिजाइंड. वी विल डिजाइन देयर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हाउ टू मूव अबाउट इट to assist in the prevention of non-compliance with the law. देख भाई, अपन है ना ऑडिटर्स है, we are not a part of the company's management or their admin team. We are not getting paid for this. तुम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑडिटर ना, ये काम ऑडिटर के प्रोसीजर का काम नहीं है, ये कंपनी का काम है. तो ऑडिटर का काम है सिर्फ रिपोर्ट करना, कंपनी का काम है काम करना. ये सब ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेटअप करना, डिजाइन करके बिठाना, वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखना, दैट इज द हेडेक ऑफ द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग दैट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, नॉट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. तो ऑप्शन सी अभी तक तो लग रहा है राइट आंसर है. आगे देखते हैं. इवैल्यूएट द इंप्लीकेशन ऑफ द नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट रिस्क इंक्लूडिंग रिस्क असेसमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. दिस आल्सो सीम्स टू बी फेयर. वी आर जस्ट आस्किंग कि रिस्क असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कितना प्रॉब्लम है, एंड विल टेक अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट. Option number A, B, and D seem to be part of the audit procedures, and C should be the answer, which is not part of the audit procedure. एक मिनट, everyone clear यहाँ पे? Everybody is clear यहाँ पे? Please give me a quick thumbs up or tell me whether it is right or not. Tell me, did you understand this? Did you understand this? Thank you शिवम म्यूट करने के लिए. हेतल, अर्चना, स्मिति, रुबेन, प्रणल, अमृता, Labdi, and Radhika. So Labdi is also here. Good.
Okay, एक second, sorry for this. Okay, let's go ahead now. Let's go to question number 15. I think ये वाले paragraph का last question है. Great. Then we have the integrated case study 2. We'll see that also. देखो क्या लिखा है. The company had availed some of the loan for new plant and machinery during the year under audit. Okay. Out of the loan sanctioned, an amount of 25 lakhs was earmarked. याद रखना loan sanction हुआ था कितने amount का? We had seen the question now once again. Loan कितने amount का sanction हुआ था? They had given us the loan of how much? 40 lakhs till 31st March. ठीक है. 80 lakhs के लिए अपन ने apply किया and they had sanctioned 40 lakhs. ठीक है. आगे देखते हैं. तो 40 lakhs का देने के बाद लोन देने के बाद 1 second, sorry for this, yeah, 40 lakhs का लोन देने के बाद an amount of 25 lakhs was earmarked for the purchase of, so we said we'll purchase something called as a machinery oil extractor, but the company has acquired an improved model of machinery, that is the oil extractor with dryer in its stead. तो उन्होंने क्या किया, ये ऑयल एक्सट्रैक्टर के बदले उसका एक इम्प्रूव मॉडल लिया हम लोग ने. उसका नया मॉडल आ गया रहेगा मार्केट में. when they had applied for the loan, that time some model was there. Now when the amount of loan came in, they purchased a better model because they thought कि चलो अपन ले रही है तो बेस्ट के साथ जाए, तो they got the new model and for the same work only, that is the oil extractor with dryer instead. So they were going to buy that one oil extractor. Now they went with oil extractor with dryer. ठीक है. State which of the reporting option would be correct. तो अभी उन्होंने पूछा है कि रिपोर्टिंग क्या रहेगा. दिखने में तो लगता है कि कारो के हिसाब से पूछा उन्होंने. They have asked कारो. Remember कारो 2020 is not applicable for you all. You have only till कारो 2016. ठीक है. और जल्दी पास हो जाओ क्योंकि मे वालों को कारो 2020 मोस्टली एप्लीकेबल हो जाएगा. देखो क्या लिखा है. मे मतलब मे 2021. State the fact in Karo report that out of term loan taken for machinery oil extractor, rupees 25 lakhs was not utilized for acquiring the machinery for which it was क्या लिखा है यहाँ पे sanctioned. So they are saying कि we'll tell them that 25 lakhs was not used for the machinery sanctioned. याद रखना, they are saying कि we were going to buy machinery oil extractor and we ended up buying machinery oil extractor with क्या लिखा है यहाँ पे dryer. So they are saying कि देखो ये अगर हुआ नहीं है तो we have not utilized the amount properly. That's what they are trying to say. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Ask the management to change terms and conditions of the term loan as the company has acquired a different machinery. Report under Karo if the management does not agree with the demand. So they are telling कि management को बताओ कि terms and condition क्या था, और अगर यहाँ पे उन लोग ने उनको पूछो कि terms and condition क्या था, और अगर